Hey guys, welcome back to the Bowling Sisters channel, and the sisters are back, and today we are going to discuss about the UEFA European Competition Finals which have been confirmed, and we are going to give our thoughts on the same. So hi sister, today we are going to discuss about the three epic finals which are going to take place in the month of May. Firstly, the Europa League Final with Rangers taking on Frankfurt. Then we talk about the UEFA Conference League Final. Sorry, I still cannot pronounce that competition's name correctly. I still don't know why it has been named like that. But never mind, UEFA Conference League, Europa Conference League, I should say. And in that, we are going to have Roma versus Feyenoord, the Dutch heavyweight. And finally, we are going to discuss about what's going to happen in the UEFA Champions League final, which is between Real Madrid, 13-time champions of the tournament, versus Liverpool, a resurgent Liverpool, 6-time champions. So sister, what is your thoughts? कैसा लगेगा ये तीन टूर्नामेंट्स में? डू यू थिंक डिजर्विंग टीम्स पहुंची हैं? व्हाट आर योर थॉट्स? हु इज गोइंग टू प्रिवेल? कौन जीतेगा चैंपियनशिप? हाँ सिस्टर, बिल्कुल सही बात बोली। बिल्कुल दीज आर गोइंग टू बी बड़े क्लासिक मैचेस होंगे। रेंजर्स फ्रैंकफर्ट का, लिवरपूल मैड्रिड और रोमा फाइनूर्ड का। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी, मतलब अगले 3 दिन तो मेरे हिसाब से मैं अपने कैलेंडर्स भी ब्लॉक कर लूंगा। आई थिंक एवरीबॉडी इज गोइंग टू डू दैट। मई 18, मई 28 और मई 25 बिल्कुल इट इज गोइंग टू बी टॉप नॉच गेम्स होंगे यूरोप के मेरे हिसाब से। लेट अस स्टार्ट ऑफ विद रेंजर्स वर्सेस फ्रैंकफर्ट। किस हिसाब से इन लोगों ने जो सेमीफाइनल्स में, आई थिंक सो, जब हमने यूरोपा की प्रिडिक्शन भी करी थी, इधर आपको हमारी प्रिडिक्शन दिख भी जाएगी। जब हमने यूरोपा की प्रिडिक्शन करी थी, हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि एटलीस्ट रेंजर्स छोड़ो, फ्रैंकफर्ट यहाँ तक पहुंचेगी। सेमीफाइनल्स मे बी, बट फाइनल्स ना मैंने, आई थिंक सो, ना सिस्टर ने भी नहीं सोचा था कि ये हमारी वाइल्डेस्ट ड्रीम में से ऐसा होगा। बट आई थिंक सो जिस हिसाब से इन लोगों ने सेमीफाइनल्स में करा है, रेंजर्स विनिंग 3-2 इन एग्रीगेट एंड फ्रैंकफर्ट 3-1 बीटिंग वेस्ट हैम। फ्रैंकफर्ट बीट वेस्ट हैम एंड रेंजर्स बीटिंग लाइप्जिग। बहुत it is a shock and एकदम से out of the blue, but then they did a brilliant job in terms of coming out and winning in this, I think so। मेरे हिसाब से सिस्टर, इन दोनों टीम्स में दो प्लेयर्स ऐसे हैं, दोनों टीम में दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस फाइनल में टू बी वॉच्ड हैं। एक मेरे हिसाब से फॉर रेंजर्स, आई थिंक सो, लंस्ट्रैम एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कमारा। ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो वॉच आउट करने पड़ेंगे फ्रैंकफर्ट को इन टर्म्स ऑफ रेंजर्स के साथ। एंड फॉर फ्रैंकफर्ट, द टू प्लेयर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट आर ऑन द राइट विंग, कनूफ है, एंड कमाडो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप। वो दोनों प्लेयर्स ऐसे खेलते हैं, अंडर नंबर 8 और नंबर 10 पोजीशन पे हैं। एंड कनूफ ऐसा है जो राइट विंग बैक की तरफ खेलता है। सो ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो ब्रेक इन करने में और काफी कट थ्रू करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तेरा क्या थॉट है इन दोनों टीम्स के ऊपर, स्पेशली रेंजर्स वर्सेस फ्रैंकफर्ट के ऊपर? व्हाट डू यू थिंक? I think sister, good point made around जो दो players you mentioned around both Frankfurt and Rangers। but मेरे हिसाब से this particular final इसलिए भी special है क्योंकि ये Rangers का 150th year है। so 150th year anniversary, इससे better क्या होगा to win a European competition and that too a Europa League। so Europa League आज की डेट में छोटा competition नहीं रहा है किसी भी एंगल से। it has always been of a very renowned relevance। फ्रैंकफर्ट अगर देखें तो जो फ्रैंकफर्ट ने बार्सिलोना के साथ किया था, आई थिंक दैट वाज द शॉक ऑफ द टूर्नामेंट। क्योंकि बार्सिलोना को न्यू कैंप में जाके हराना, और वो भी जिस तरीके से हराना, जिस तरीके से वो अपने फैंस लेके आ गए, एंड दिस इज राइट नाउ अ कार्निवल इन जर्मनी। द वे फ्रैंकफर्ट लिटरली लीपफ्रॉगिंग वन टीम आफ्टर द अदर, और अब फाइनल में पहुंच गए यूरोपा लीग के। और अगर मैं इनकी पोजीशंस की भी बात करूं इनकी लीग्स के अंदर, तो वी ऑल नो स्कॉटिश लीग के अंदर इट्स ओनली सेल्टिक एंड रेंजर्स प्राइमरीली। लास्ट 30 सालों में इनके अलावा कोई नहीं जीता है। लास्ट आई थिंक वाज एलेक्स विद एबरडीन विनिंग द टाइटल इन स्कॉटिश लीग। और अगर मैं फ्रैंकफर्ट की बात करूं, फ्रैंकफर्ट इज नॉट दैट अ गुड साइड इन द बुंडेसलीगा। अभी आज की डेट में 12th चल रहे हैं वो। सो फ्रैंकफर्ट के लिए इट हैज बीन अ रियली ग्रेट टूर्नामेंट।
I personally feel इसलिए भी ये मैच इतना ज्यादा enticing होने वाला है because nobody expected, as you correctly pointed out, nobody expected these two sides to be in the finals. But saying that, sister, what's your prediction? What do you think? Who's going to win? यार मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, I think so Frankfurt is going to edge Rangers out this time around. 2-1. Scoreline? 2-1. 2-1 to Frankfurt. 2-1 to Frankfurt. I think I also agree with that, and maybe Frankfurt is happy because the way Frankfurt has been playing, and especially इस tournament के अंदर, I would give it will be a very very close, but yes, a kind of a 2-1 or a 3-2 victory for Frankfurt. Extra time जाता दिख रहा है? नहीं ना? नहीं, 90 minutes में खत्म हो जाएगा. So moving on, sister, तेरे को क्या लगता है, मतलब अब तो राउंड 2, मतलब हमारी इस वीडियो का जब यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल जो 25 तारीख को है, रोमा वर्सेस फायनूर्ड का, तेरे को क्या लगता है इस वाले में, क्या लगता है कि तेरा थॉट प्रोसेस क्या है, हु इज गोइंग टू बी ऑन टॉप ऑफ द कॉन्फ्रेंस लीग? सिस्टर पहले तो ना, एक तो ये जो इतना अच्छा एक्साइटिंग ये लीग गई है इस बार कॉन्फ्रेंस लीग, आई थिंक ये नाम जस्टिफाई नहीं करता है यार. यूरोपा को ना ये नाम चेंज कर देना चाहिए. ये क्या कॉन्फ्रेंस क्या है, क्या कौन से ऑफिस की मीटिंग में बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल है? मतलब एक इतना इतना अच्छा टूर्नामेंट गया है, फर्स्ट टाइम तुमने निकाला है, थोड़ा नाम तो अच्छा, नामकरण तो अच्छा कर दो यार, ठीक है. बट टॉकिंग अबाउट द फाइनल्स, आई थिंक रोमा और फायनॉर्ड दोनों डिजर्विंग विनर्स हैं अभी तक, यहाँ तक जो पहुंचे हैं. फायनॉर्ड हैज आल्सो प्लेड रिमार्केबली वेल मार्सेल के अगेंस्ट. मार्सेल इज अ very top notch and a regular team in the European, I would say, quarterfinals, semi-finals and all. So Marcel को हरा के आई है Feyenoord. Roma, Jose being Jose, ठीक है, ट्रॉफी तो वो लेके ही जाता है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है. But I think we are all underestimating Feyenoord because Feyenoord are a previous European champion in 1970, whereas Roma का ये first final है after 28 years. They have yet to win a particular title in Europe. So I think Roma will start off as a team जिसके पास ऐसे finals का experience नहीं है, but I think Jose will cover it up. I think ये बहुत ही hard fought game होगा, but I am still giving Jose the edge. I'm not giving Roma the edge, I'm giving Jose the edge in this final. What's your take? नहीं, I agree. मतलब जिस हिसाब से मैंने जब कॉन्फ्रेंस लीग का सेमीफाइनल्स हो रहे थे, इट वाज बिकमिंग बिकॉज लेस्टर सिटी इन्वॉल्व थी कॉन्फ्रेंस लीग के अंदर, एंड लेस्टर सिटी प्लेइंग होजे मोरिन्यो ऑलवेज इज ब्रेंडन रॉजर्स एक टाइम पे अप्रेंटिस था Jose Mourinho के साथ. So it is always good to watch Jose Mourinho play and his team play. चाहे वो लोग बोले boring है, नहीं boring है, but it is always an exciting game to watch. And same thing with Feyenoord as well. I think so they played pretty well in the semi-finals. First leg in Rotterdam, they were pretty good. They beat 3-2 to Marseille, and the next game away जाके इन्होंने draw करा लिया. And again away goal rule तो अब है नहीं, but to give out the sense of respect for Roma, they drew at Leicester 1-1 and then winning at home in 1-1 1-0 style, typical Jose to kill the game. मेरे हिसाब से, like you perfectly said, अगर रोमा को finals का experience नहीं है, लेकिन somebody has massive amount of experience of being in crunch situations and tight finals and coming out on top with mind games, and उससे अच्छा mind game player कोई नहीं है आज के टाइम पे. Jose Mourinho will come out on top, and I know it. If लिखवाना भी होगा ना कल, I think so you and I will agree on it. Jose Mourinho will come out on top and be nothing, no disrespect to Feyenoord, but then मेरे हिसाब से he is going to come out on top. 1-0 final. So 1-0. So it's a close game according to you. It's going to be as soon as Roma scores, it's going to be a dead game then. Right. I think I agree with you on that, and I think I'm going for a 2-0 victory for Roma. 1-0 उसके बाद बस पार्क, और उसके बाद लास्ट में लास्ट में काउंटर में जाके उसको सील करके ओके सी यू टाटा बाय बाय वो करेगा. मेरे हिसाब से यही होगा. This is what I think is going to be the major aspect of the Conference League on the 25th of May. Again a mouth-watering thing to watch again on the 25th. I think the last week of May हम सबके booked होंगे. So sister, did you notice that अभी तक के दोनों finals में I think both of our predictions is going towards one team, and almost हमारी score line भी match कर रही है. Let's see what happens with
with the big one, the big years, the Champions League. Liverpool versus Real Madrid. 13-time champions versus 6-time champions. What's your take on this? यार पता है मैंने अभी आई थिंक सो साहिल तूने मैंने एक वो अभी रिसेंटली एक मीम देखा था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कार्टून एनिमेशन स्टाइल में मीम था जहाँ पे सेमीफाइनल्स का व्हेन पेप गार्डियोला सब कुछ समझा रहा है बोर्ड के ऊपर एंड रियल मैड्रिड का स्ट्रेट फॉरवर्ड मंत्र है पास टू बेंजेमा. आई थिंक सो फॉर द चैंपियंस लीग एज वेल it might not be as simple as passing off to Benzema, but that is going to be because पीछे Virgil van Dijk जैसा एक प्राणी खड़ा है, very strong. But I think so more than Benzema, 3 more players very important in my eyes are going to be Vinicius Junior on the left, a good battle with Robertson, or I think so Robertson के साथ बहुत अच्छी battle होगी either on the left or it's going to be Alexander Arnold, whoever is going to be covering him, left से या right से जो भी switch क्योंकि इन दोनों का होता रहता है. I think so the number 2 major battle is going to be in the midfield जहाँ पे Fabinho and Modric एक again a big battle over there, and तीसरा बंदा होगा Toni Kroos. Toni Kroos if he plays in with Modric, Fabinho and Benzema, 4 major players for Madrid. For Liverpool, I think so Van Dijk, Salah, Mane, and obviously wings se attack. It like you say, it is going to be an all-out night. I think so. It is going to be a hard metal, hardcore game of football on the 28th of May, which is going to be. I hope it doesn't happen like what happened in 2005-06 with Carlo Ancelotti, where he was leading 3-0 with AC Milan against Liverpool, and then all of a sudden that night everybody remembers. Half time ke baad it was a different ball game, but I really hope कि it's going to be something absolutely different. Huge respect for Carlo Ancelotti. What is your thought? मेरे हिसाब से तो ये होगा. तेरा को क्या लगता है? I think sister you correctly pointed out कि दोनों का playing style different है. Klopp की teams generally, as you said, hard metal football, gegen pressing, and जिस तरह से वो attack करती हैं, and Real Madrid का काफी fluid game है, one dimensional कह सकते हैं उसको आज की डेट में, but I think effective. मैनचेस्टर सिटी के साथ उन्होंने शो कर दिया वो. मैनचेस्टर सिटी भी काफी सिमिलर है लिवरपूल के इन टर्म्स ऑफ द वे दे प्ले. तो आई थिंक ये बहुत ही इवनली मैच्ड अप कॉन्टेस्ट है. इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस आई फील दोनों ही एक्सपीरियंस मैनेजर्स हैं, बट हाँ ऑब्वियसली Ancelotti is a different ball game altogether, जिस तरह की उसका एक्सपीरियंस रहा है. Klopp has been relatively new one, but I think ये लिवरपूल के लिए थोड़ा सा रिडेम्पशन वाला होगा मैच. आई फील जो उन्होंने 3-4 साल पहले अगेन द सेम फाइनल जो वो हारे थे विद रामोस डूइंग व्हाट रामोस डज बेस्ट टू साला, ठीक है. तो आई थिंक ये रिडेम्पशन वाला गेम हो सकता है. साला ने भी ट्वीट किया है दैट he wanted Madrid back because they have a redemption in that, but I personally feel ये गेम बहुत क्लोज जाएगा. पार्क डे फ्रांस में बहुत ही ज्यादा अपना PSG का जो स्टेडियम रहा है वहां पे कैसे कमबैक भी हुए हैं. So I personally feel in terms of the tactics, what you said is absolutely correct. But I have a very strong hunch that in this game, it will be all about a team who is scoring the first goal. I feel अगर ये लिवरपूल ने पहला गोल मार दिया, I think the way they played, I think रियल मैड्रिड के लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. But अगर रियल मैड्रिड पहला गोल मार देती है, and also I feel there's one more factor is इस particular tie के अंदर, इस particular game के अंदर, जो कि है how the Premier League and the FA Cup finals go for Liverpool. क्योंकि Premier League में हमने देख ही लिया है, they are almost gone with City almost winning the league now. अगर FA Cup final के अंदर चेल्सी ने हरा दिया लिवरपूल को, I think मोरल डाउन हो जाएगा. क्वाड के सपने लेने वाले हैं, फिर वो एक ही ट्रॉफी 2 ट्रॉफी के ऊपर रह जाएंगी. I think वो मोरल डाउन वाली लॉस होगी. I personally feel this final hinges on the results of the other tournaments. My personal favorite in this particular tie, in this particular final would be Liverpool, जिस तरह की उनकी टीम है, जो उनकी strength है. But in terms of the predictions, sister, what's your take? What's the final prediction from you? यार मैं तेरे से agree तो करता हूँ, but I'll have to agree to disagree also कुछ जगह पे. मेरे हिसाब से
जिस तरीके से यू सेड सलाह बहुत इमोशनली चार्ज्ड होगा, मेरे हिसाब से दैट इमोशनली चार्ज ऑफ गेटिंग रियल मैड्रिड, एंड आई डोंट थिंक सो किसी के पास उतना एक्सपीरियंस है, एंड कार्लो आंचेलोटी जैसा एक्सपीरियंस जो फाइनल्स में है, बीइंग इन 5 फाइनल्स एंड विनिंग 4 ऑफ देम, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को होता है। रियल मैड्रिड आर सीरियल चैंपियंस लीग विनर्स एंड nobody has done it more than them. So मेरे हिसाब से it is going to be Real Madrid pushing their luck, because जिस हिसाब से उन्होंने they played against PSG, they've come back against they came back against PSG, they came back against Chelsea, they came back against City, and now Liverpool. I think so, even if Liverpool is leading, until the fat lady sings, जैसा बोलते हैं, until the fat lady sings and until the whistle is blown, you cannot rule out Real Madrid, at least in this time around. सबने दिया था वो कि बस पेरिस हटा देगी, हर कोई हटा देगा, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है। मेरे हिसाब से फॉर अ प्रेडिक्शन एस्पेक्ट यू गिविंग मी, it is going to go into extra time and it's going to be 2-1 Benzema scoring a brace. I'll go that level. What are your thoughts? I think my mind is telling me that Liverpool is the favorite, but my heart is going to give the prediction, which is entirely opposite, and I'm going to go Real Madrid 3, Liverpool 1. Is it finishing in 90? Is it finishing in 90? I think it finishes in 90. Cool. Chalo. Brilliant. So I think that is all for today, sister. So guys, thank you very much for tuning into the Bowling Sisters today and taking down and listening to us what our thoughts are on the Europa League, the Conference League, as well as on the Champions League, and our thoughts who's going to be winning it. Apparently, sister and I, for a change, have agreed to the most of our choices this time around. But then, thank you very much again. Catch you guys in the next video, and do like, share, subscribe, and do click on that bell notification so that you don't miss out on any new videos. Cheers. Bye bye, guys.